So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Next day we are supposed to come to this place and just say thank you, because हमने यहाँ पे एक बोला था भगवान अगर आप नॉर्दर्न लाइट्स दिखाओगे तो हम यहाँ पे आएंगे, तो हम आ चुके हैं. Looks like it's also a graveyard along with the church. How we like good spirits. Thank you spirits for showing us like the northern lights. We are at the Myburton lookout, so you can see some geothermal plants because this area is very rich in geothermal activity. And that's a volcanic crater in up there. Let me zoom. This one. It's a volcanic crater, and that is a volcanic lake. That is one of the dormant or extinct volcanoes you can see at the distance. When I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up. The way to Waterfalls volcano crater. So what you can see ahead, that was once a volcano erupted around 25,000 years ago. ये बहुत बड़ा क्रेटर है. We gonna go climb on top of it and walk. अभी हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहे हैं. That is we gonna climb this 25,000 years old volcanic crater. इसका नाम है Waterfalls. As you can see, we are here and we're gonna walk up here and probably around the volcano. अभी हम चढ़ रहे हैं. तो पीछे दिखा, it's a volcano called Waterfall. This is a very steep incline. I'm already at quite some height. Only 5 minutes into walking. There's Lake Myburton. The team है Minal Hatriya Gayatri. See them just walking up the hill with all the dedication. Reached the volcanic crater. I have Minal, my lovely wife, and my awesome friends Gayatri and Atriya. And now you can see Lake Myburton. And on this side, the crater. And this crater is like one of the biggest in the planet. It's over 1,000 meters wide in diameter. A truly spectacular sight. This is Dimmu-Borgir, a crazy valley formed by the lava thousands of years ago. पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां. Welcome to Dimmu-Borgir. न कहीं है जमीन, These are न कहीं आसमां. lava cones. सरसराती हुई टहनियां, पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां. सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें.
ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां, और मैं, सिर्फ मैं, अपने होने पे मुझको यकीन आ गया। So Min was just chilling in the lava cave, and you can see these almost crazy sights in the Maburton Lake area. खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े, दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, खुली है जो पर कहेगी नजर, लगता है अब है जागे हम, फिक्रे जो थी Pseudo craters. निकले उनसे आगे हम। That's the team. जिंदगी Right, oh, look at that. ये हमसे कह रही है जिंदगी। Look at that. हाँ, यही तो है। अब तो जो भी हो सो उड़े, खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे This is Waterfalls, उड़े, the smaller brother of Niagara Falls. दिल के You can जहां see में at the distance is a pretty cool fall in a pretty cool location. And the flow is it's not bad actually, very good on a sunny day. And you can see the river जाएंगे कहाँ, flowing to the falls. Strong current. तुम ही हुआ, फिरते हैं महके महके हम, हुई है कई बातें नहीं जब है ऐसे बहके हम, हुआ है यूं कि दिल पिघल गए, बस एक पल में हम बदल गए। ओहो अब तो जो भी हो सो हो। तीसरी बार हम आ चुके हैं बोनस में, एंड दिस टाइम इज इन एक्यूरेरी। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। इट्स लाइक द सेकंड बिगेस्ट सिटी इन आइसलैंड। काफ़ी अच्छा है। इट्स लोकेटेड ऑन द सी कोस्ट, वेरी पॉपुलर फॉर व्हेल वॉचिंग, एंड टेस्ला सुपर चार्जर भी है। And one about Iceland is number of EVs. यहाँ पे कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स हैं, it's surprising. It is so surprising. I haven't seen so many electric cars even in Canada, जितनी Iceland में, और हर एक ब्रांड की। You can see Teslas, you can see Audis, you can see even Mitsubishi, Kia, Hyundai, but a lot of electric cars, which is very good. Good, very good. Offloading हो रही है हमारा स्टॉक। ये हम फ्रिज में लगा रहे हैं सारा। ये हमें बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे हमने बस ये खरीद लिए हैं कपामेनिया नूडल्स, एंड वी आर एंजॉयिंग इट। भाई, हाउ डू यू लाइक द नूडल्स? एंड देन वी आल्सो फाउंड दिस लिटिल थिंग, नोट दैट, क्या नाम था इनका? यस, सो टेस्टी। टर्फ चर्च देखने आए, so we are little late, but still we can see some. It's kind of getting dark. और ये है आपका चर्च, but looks like it's closed, तो दूर से देख पाएंगे। and there's also a graveyard. यहाँ पे हर एक चर्च के साथ ग्रेवयार्ड रहता है, वो कहानी मुझे समझ नहीं आई, but you can see. It's called Tuft Church. Good morning, day 7 of the trip. We camped overnight at Glundås, a small town in the north side of Iceland. It's on the coast of, I'll say, Arctic Ocean. And then we have a
river flowing एहसास ही एहसास है। right here, so that's what we were hearing the whole night. तो आज हमारा जो प्लान है, so we're gonna see the Kirkufell, Budir and probably head more closer to Reykjavik. जिसका पता तुमको भी And है, tomorrow is when we go to Reykjavik. जिसकी खबर मुझको भी तो है। ठीक है, let's grab some दुनिया से भी छुपता नहीं, breakfast ये जाने and किस fill our वजह से। gas at N1 stations. के हुए हैं, तो हमने अभी पेट्रोल भरवाया, डीजल सॉरी, and then we are also filling up the gas in the propane. क्योंकि खत्म होगी, you know, Indian cooking is a little bit much more than average European cooking. बहुत ही एक यहाँ पे फैंसी ब्रेकफास्ट प्लेस में आ गए हैं. So let's see how the experience is. जब जब दर्द का बादल खाना आ गया है, जब गम का साया लहराया, हमारा सबसे जब फैंसी आंसू पलकों तक आया, ब्रेकफास्ट अभी तक का. जब ये तन्हा दिल घबराया, How's it, Minna? हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। हमने कभी detour ले लिया. We were on the way to Kirkufell, but then we saw it's called like the land of seals. So हम मुड़ लिए हैं. Hopefully it'll open up to like the ocean. And let's see if we get some seals. 6 किलोमीटर का रास्ता है. So we'll find out. हम चलते चलते आ गए हैं एक ऐसे ही एक रैंडम टर्न लेके आइसलैंड की लोकल गलियों में. ये बिल्कुल नॉर्थ है, सो ये goes all the way to the North Pole. It's getting cold. They say it's called like the land of seals. So we have turn लिया for seals. So I think बहुत दूर है हमसे अभी. That's good. Good little adventure. हमें मिल गई आइसलैंड की बिल्ली. किटी 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 किटी. Looks like they are feeding on whale. वहाँ पे बहुत ज़्यादा birds हैं. Oh, it's cold. Just to explore more of the Iceland, हम यहाँ पे आ गए हैं ग्रेवल रोड पे, पर इसमें बहुत हमारी गाड़ी खटखट खटखट चल रही है. I think we have to go back via ring road. पर यहाँ से जो व्यू है, that looks very good. तो these are the दिलों में best तुम अपनी views. बेताबियां लेके चल You can रहे see हो आगे तो तक जिंदा हो। ये जो बैक वाटर्स हैं, नजर में the ख्वाबों Arctic की and then बिजलियां they'll लेके चल be रहे हो तो जिंदा हो। meeting. हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। करना पड़ा मजबूरी से. So there was like a car crash on the main road, so we are taking the gravel road and the mud road. It's like really remote. This point. That's only maybe. ये बहुत ही एक यूनिक जगह पे कैसे इन द GPS पानी पानी and a very different road, taking a detour on the gravel. Well, I'll give it to you, no worries. Fresh poison each week. We were born sick. You heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to. Finally, we've reached our next destination, surrounded by the lava fields and the Arctic Ocean. Is the Budir Church, a really popular one. And we have like a lot of fog today.
church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen. This is Buddhist church. Really, really beautiful church in black. You can see there's also like a graveyard, a very common feature in Iceland. And of course there are like volcanoes. Baba, black sheep, white sheep. कैसा लग रहा है बुद्धीर में? This was especially your For me, because I really wanted to see this live. It's most Instagrammable pictures are taken here, and yeah, today we are seeing it. It's amazing. Yeah, you like it? Yeah. It's cold. Also always cold. Okay. Bye Buddhir. The cup noodles are being prepared. And this is special because the location is this. How cool. मौसम ठंडा हो गया है बिल्कुल और देखते हैं क्या चल रहा है. और ये हो गया है रेडी हमारा मैगी कपा नूडल्स. मीनल, excited for some Maggie? How about you? And how about you? ढूंढ रहे हैं कोई अगर मिल जाए कैंप साइट. Hopefully मिल जाए. It should be a great time.